So, are we there? Okay, good. So, let me start a next topic, that is the pharmacokinetics. So far, we talked of ADME, and this is also the part of a ADME. In the sense, this is in vivo type. We talked of in vitro, we talk of absorption, distribution, metabolism, excretion. This is how these are all coming in one topic, which is known as the druggability. सी ड्रग के दो हिस्से हैं समझ लो, एक हिस्सा है एफिकेसी, दूसरा है ड्रगेबिलिटी और तीसरा है सेफ्टी। अगर तीनों चीज़ रहेगी तभी ड्रग सक्सेसफुल होता है, वरना वो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, चाहे आप अरबों रुपए खर्च कर दो। ठीक है, पहले हिस्सा जो उन्होंने कल बताया कि भाई क्या क्या स्टेजेस होती हैं, हमने डाटा, टारगेट, एफिकेसी के बारे में बात की। आज हम बात कर रहे हैं कि ड्रग क्या हम देंगे और वो यूज़। कभी कभी आपको लगता है यार ये बताइए, उसने खाया तो उसको आराम मिल गया, हमने नहीं खाया तो हमें आराम नहीं मिला, क्यों? एनीबडी गेसेस? You read all those things, you might have known about it. Yeah, body respond, or we can say हो सकता है हमको एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हो सकता है कि हमारे में एक्सप्रेशन उस एंजाइम का ज़्यादा था, तो जैसे ही गया उसने उसको किल कर दिया। तो वो चाहिए था 100 ग्राम काम करने के लिए और एंजाइम ने ऐसा काटा कि उसके अंदर 1 ग्राम बचा है, तो फिर वो काम नहीं करेगा, बुखार थोड़ा कम हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा याद रखो, जो आपको दवा सूट करती वही ले, नए एक्सपेरिमेंट ना करो। अगर ना कर रहा हो तो उससे ये परेशानी, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके चेंज कराओ दवा। आई एम ट्राइंग टू गिव यू विद द एग्जाम्पल्स विच यू डू इन अ डेली लाइफ। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद सी ये क्या होता है, जब बॉडी ड्रग जब जाता है तो ये ग्राफ समझ लो, पहले तो इसको समझो। ये लिया हमने, इसके बाद गया, ये जो हम अभी तक बता रहे थे अब्जॉर्ब हुआ, फिर ये लीवर है, लीवर में होते हुए इंटेस्टाइन में गया, इसी लीवर के थ्रू जब निकला तो ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसके बाद यहाँ लीवर है, यहाँ मेटाबॉलिज्म होता है, फिर ये एक्सक्रीशन हुआ और निकल गया। मैं बार बार रिटेट कर रहा हूँ इस बात को ताकि तुम लोग बात को समझो, ये बहुत ज़बरदस्त साइंस है जो बता रहे हैं हम। आई हैव 62 पेपर्स ऑन दिस साइंस ओनली। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस टू अंडरस्टैंड। 14 पेटेंट इसीलिए हैं कि हमने कुछ नया इसमें किया हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट। दिस इज अ फैसिनेटिंग साइंस, यू लव इट। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी ये जो ब्रांच है, दे कैन लुक ऑन दैट पार्ट एंड दे कैन डू वंडर्स, यू नो। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू। ओके, तो क्या होता है जब ड्रग बॉडी की, आप ग्राफ को देखो, ये गया और एक सीमैक्स तक पहुंचता है। होता क्या है, कोई भी आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल, आपने पैरासीटामोल खाते हो, डोलो 650 फेमस ड्रग ऑन अ ड्रग स्टोर। ओके, बुखार हुआ, 650 लिया और खा लिया है, और उसके बाद किसी को ऐसा हुआ है कि खाते ही बुखार ख़त्म हुआ? नहीं, इट टेक्स आवर्स, इट टेक 1 आवर, 45 मिनट, 42 मिनट। क्यों? हम लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं घरों में कि दवा का असर नहीं हुआ अभी तक। हैव यू हर्ड दैट वर्ड? ओके, व्हाई इट इज? दिस इज द रीजन व्हाई इट डजंट वर्क क्विकली। ये गया, ये एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने पे जब वो सीमैक्स पे पहुंचा, जब उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन था, तब वो बुखार पे एक्ट करता है, फिर वो धीमे धीमे वो बाहर हो जाता है, फिर आपसे कहता है 4 घंटे बाद लेना। क्या कहता है? क्यों लेना 4 घंटे बाद? क्योंकि 4 घंटे का 2 घंटे उसका हाफ लाइफ जो है वो 1 घंटे का है। उसके बाद वो नीचे चला गया, ग्राफ खत्म हो गया, ये एक्सक्रीट हो गया। अब आपको फिर बुखार आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो खत्म नहीं हुई, तो बुखार की दवा थी सिर्फ, फिर 4 घंटे बाद दिया गया। आर यू गेटिंग? तो दिस इज नोन एज, इस स्टडी को कि ड्रग लिया, एब्जॉर्ब हुआ, कब सीमैक्स पे पहुंचा, कब निकला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिट्रेटिंग दैट वर्ड। You take a drug,
You take a fever drug, dolo something, it takes 1 hour to act on you. Simple reason, because that's not the Cmax concentration of it. It works on a Cmax concentration, it gets excreted, then doctor says you take after 6 hours. Means your fever will come, you have not killed the infection, the cause is still there, effect has been reduced, now the cause will induce one other effect and that effect will be controlled by your drug. Are you getting? एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट. कॉज है इन्फेक्शन, इफेक्ट है फीवर. फाइन. इफेक्ट की दवा हमने दे दी फीवर की, वो थोड़े. तो इस स्टडी को कि ड्रग लिया, कब सीमैक्स पे पहुंचा, कब निकला, उसका टी हाफ क्या था, कब इसकी, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. क्या कहते हैं? ए काइनेटिक ऑफ ए ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक. आर यू गेटिंग इट? रियली? कंपनी पेज अ लॉट ऑफ मनी टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. हाँ. How do we learn about the pharmacokinetic drug? We already talked physical chemical property, absorption, distribution. और ये सब क्या होता है कि हम लोग पहले जब ये देते हैं ड्रग केमिस्ट हमको, तो हम इसको पहले इन विट्रो में टेस्ट करते हैं. उन्होंने 10 कंपाउंड दिया, मैंने कहा इसमें से 2 अच्छे हैं, अच्छा इसमें से 2 में ये बेहतर है, इसको हम एनिमल में डाल के ये फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं पीछे वाली. हैं? अब इससे बहुत कुछ निकाल, मैं इस ग्राफ से कम 4 पेज लिख सकता हूं कि इस ग्राफ में क्या क्या है. ठीक है. और इसी से स्टोरी एक ड्रग की बनती है. ओके, नाउ यू सी ओरल वर्सेस इंट्रावेनस. ओरल जब लिया तब क्या हुआ कि हमने दिया ट्रांसफर टू द गट, लीवर टू गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम. Intravenous drug go to the directly to the blood stream, there is no absorption. That what I was telling, I am trying to repeat that word which I was telling earlier, but this will give you a message how it works. अब ये बताओ कि फार्माकोकाइनेटिक काम क्या करता है? Why are the pharmacokinetic important? If a drug is going to work, it needs to be in a right place, right concentration and right amount of a time. Simple reason. You need a migraine, you have a migraine, you know that migraine कैसे हो रहा है. अब जब माइग्रेन जहाँ हो रहा है उसकी टारगेट पे या तो ड्रग जाए, पहले तो पहुँचे, फिर पहुँच के उस पर काम करे और फिर सही वक्त तक रहे, तभी कामयाब होगा ना. फुटबॉल देखने वाले देखते होंगे, उसमें लेता है कि सेंटर फॉरवर्ड इज अ गुड फॉरवर्ड हु गोज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम. लोग कहते हैं वहां पहुंच गया, उसने शूट मार दिया गोल में. नहीं, ही स्टेज एट द राइट टाइम. ही नोज कि बॉल ऐसे आएगी, वो अंदर मारेगा, सेंटर करेगा, फिर हम शूट करेंगे अंदर. तो दैट इज हाउ द ड्रग वर्क्स. यू नीड दिस पैरामीटर टू फुलफिल टू हैव ए ड्रग वर्किंग ऑन इट. तो ये जो ग्राफ है ये बताता है. ये अब इसमें देखो कितने वैरायटी के ग्राफ हैं. एक ग्राफ बता रहा है कि ऊपर गया और बहुत जल्दी वो प्लेट्यू हो गया और नीचे आ गया. समझे? ये ग्राफ बता रहा है ये एब्जॉर्ब हुआ, थोड़ा सा टाइम लिया, फिर एक उसने सीमैक्स मारा, उसके बाद फिर ऊपर मारा, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ. एब्जॉर्प्शन होने के बाद धीमे धीमे इसका, तो जितना बड़ा ये सर्किल होगा, ये जितनी बड़ी सर्किल होगा उतना उसका टी हाफ ज़्यादा है. टी हाफ क्या होता है? Yeah, it's not usually half, it's along with a lot of things. 0 point, if you remember the whole story, people say half time, जितना half elimination में जितना लग जाए, ऐसा होता नहीं है, हैं? उसके पीछे पूरा कंसेप्ट है. ठीक है. तो अगर किसी ने केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी होगी तो उसको ये याद होगा कि टी हाफ इज नॉट द हाफ, इट्स a lot of things, lot of constant act on it. But for the sake of an understanding, it's a drug. Half of the concentration happens at the respective time is known as a T half of a drug. यूजुअली हम लोग कहते हैं 3 घंटे का है, मगर कंपाउंड 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेशन गिरा देता है. मगर वो एक कैलकुलेशन है, ट्रिपीजियम कैलकुलेशन, जिस पे एक्ट करता है. अब देखो, अब क्या है कि अब इसी से ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा ओरल है, कौन सा आईवी है. अब आईवी में क्या हुआ कि हमने प्लाज्मा में दिया. क्योंकि क्या करते हैं जब हम ओरल ड्रग देते हैं, पहले हम ड्रग को लेते हैं. ये ट्यूटोरियल है इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं, वरना आई वुड हैव थ्रू. हम लेते हैं, हम ड्रग को लेते हैं, 1 mg लेते हैं, उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को हमें डोज करना होता है. और डोज करने के लिए हम जो है एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर फॉर्मुलेट करते हैं. आईवी हमेशा सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन होता है. क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर हम कोई और सस्पेंशन नहीं डाल सकते हैं, वो सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन विद अ पर्टिकुलर पीएच पे रहता है, ताकि वो सीधे
आईवी में जाता है सीधे और वेनस में जाता है, और ओरल को हम अक्सर सस्पेंशन करते हैं। अगर नहीं होता है तो हमको सॉल्यूशन करते हैं, उसकी कई रीज़न है क्यों करते हैं, वो हम आपको हो सकता है बताएं आगे स्लाइड में होगा तो। मगर क्या हुआ, जब हमने आईवी दिया, वेनस में दिया, तो क्या हुआ, और फिर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे, डिफरेंट टाइम है, देखो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे है टाइम है, इसी तरह 0 आवर, 8 आवर, 16 और 24 घंटे। इन टाइमों पे हम सैंपलिंग करते हैं। क्या करते हैं, सैंपल मतलब प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड लेते हैं, अब ब्लड को स्पिन ऑफ करके हार्वेस्ट करके प्लाज्मा बनाते हैं। कैसे बनता है कोई जानता है, ब्लड से प्लाज्मा कैसे बनता है, कोई बता सकते, कितने पे, हाँ 3100 RPM। हाउ मच टाइम, रियली, बहुत जल्दी हो रहा है। कौन सा है तुम्हारे पास भाई? It's depend upon the rotor, it's depend upon the seed, you may be right, but it takes around 30 minutes or 20 minutes, something which we run, and make sure that you should not overrun it. Why you should not overrun it? Because it will hemolyze, you will get a lot of blood out of it, and it will be useless for doing an experiment. Okay? तो क्या हुआ, फिर हमने उसके प्लाज्मा लेते हैं, और फिर हम प्लाज्मा लेके उसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस का पार्ट मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उस एनालिसिस से हम उस कंपाउंड को देते हैं जो दिया है उस प्लाज्मा में। अब ये जो कंसंट्रेशन है, ये प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा के अंदर ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये नैनोग्राम पर ml में हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाली साइड में देखो नैनोग्राम पर ml है, ये टाइम है। क्योंकि हमने आईवी दिया, तो आईवी देने की वजह से हमने डायरेक्ट ब्लड में दिया, तो उसको एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं हुई, तो ये सीधे ऊपर से ग्राफ आ रहा है। और यहाँ पे हमने उसको ओरल दिया, तो ओरल एब्जॉर्ब हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसके लिए वो प्लाज्मा में जब आया तो ऐसे कर्व बना है। कभी कभी लोग गलत डोज कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि आईवी दिया या एससी दिया। आईवी देने की जगह एससी दे देते हैं, तो उसके ग्राफ में ही दिख जाता है कि उसने आईवी नहीं दिया, क्योंकि एससी में क्या होता है, वो स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, वो यूं जाता है, कहता है आईवी दिया, गलत होता है वो है। तो ये ग्राफ बहुत कुछ कहानी बताता है, ये ग्राफ इतनी कहानी बताता है, लोग ये ग्राफ लेके फोटो खींच लेते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में और जाके बताते हैं कि इनका ड्रग इन्फीरियर है कि बहुत अच्छा है। मिराटी का ड्रग आज काम, इतनी अच्छी एक्टिविटी है, इतना अच्छा उसका क्लिनिकल स्कोर है, वो सिर्फ मात खाएगा एस्ट्राजेनिका से ओरल की वजह से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई फॉर्मुलेशन डेवलप कर ले, हमने तो कई तरीके से कोशिश की हुई है, हम अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं, बाहर एक कंसेप्ट है मेरे पास, प्रोवाइडेड विल डू इंशाल्लाह। प्रोटोकॉल्स ऑफ पीकेज, पीके का प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं, वो ये है कि ट्यूब, व्हाट ट्यूब शुड वी यूज़, व्हाट सैंपल विल बी कलेक्टेड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इंटरिम सैंपल कितनी देर का लेना है, वो डिपेंड करता है, आपको ड्रग का मालूम हो कि कितनी देर रुकेगा बदन में, तो ये सब लेके हम लोग फिर फ्रीज़र टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको किसी लैब से किसी जगह शिप करना है तो वो भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए। एक और बहुत अच्छा काम है कि आजकल टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छी साइंस है। किसी के पास अगर कंसेप्ट आ जाए कि हमको किसी तरह एम्बिएंट टेम्परेचर पे सैंपल को हम कोई चीज़ केमिकल डाल दें और उसकी वजह से हमको टेम्परेचर कहीं चेंज ना करना पड़े या टेम्परेचर स्टोर ना करना पड़े, तो समझ लो तुम जो हो उस दिन के एटलीस्ट नोबेल लॉरिएट हो चाहे ना हो, एंटरप्रेन्योर तो हो जाओगे और एक ज़बरदस्त चीज़। तो ये सब सोचो, जो आदमी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, इधर है, वो सोचे कि ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या, हम ड्रॉप करते हैं, उससे इफेक्ट भी ना जाए उसका। आई एम ट्राइंग टू गिव यू आइडियाज, ट्राई टू थिंक ऑफ दोज आइडियाज फ्रॉम योर नेबरहुड और ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अक्रॉस द प्लेस। ओके ओके, दिस इज हाउ द बायोबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बायोबिलिटी कितनी है। बायोबिलिटी क्या होता है, बायोबिलिटी कंपाउंड बॉडी के अंदर, हमने आईवी दिया, आईवी को हम प्रिज्यूम करते हैं कि 100% हम उसमें ड्रग चला गया। क्या चला गया, क्योंकि हम सीधे प्लाज्मा में दे रहे हैं, वेनस में दे रहे हैं, और ओरल की वजह से जो इतने बैरियर हैं इनकी वजह से कितना कम हुआ, उस रेशियो को बायोबिलिटी कहते हैं। जितनी अच्छी बायोबिलिटी, ओरल बायोबिलिटी, उतना अच्छा ड्रग है। अरबों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए। सिप्ला जैसी कंपनी, जाइडस जैसी कंपनी, इंडिया की सारी कंपनी इसी पे काम करी, इसी पे जी रही है, इसी पे अरबों कमा रही है। सिर्फ बायोबिलिटी बढ़ाती है, फॉर्मुलेशन बढ़ाती है और कुछ नहीं, इनोवेशन उनके पास नहीं, यही काम है उनका।
ठीक है, तो ये है कि हाउ यू वांट टू डू इट एंड हाउ यू वांट टू टेक इट। ये हम अपना एक प्रोटोकॉल तुम लोग को शेयर कर लेते हैं कि क्या है। देखो ये फॉर्मुलेशन 1 है, ये फॉर ए नैनो टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली द टीम हु आर रियली इंटरेस्टेड इन फॉर्मुलेशन। ये देखो ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने एक पुअर बायोबल कंपाउंड था हैविंग ए गुड परमेबिलिटी एंड मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी। हम उसको क्या किया, हमने कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को टेस्ट किया और उससे पता चला कि वो 10 माइक्रोमोलर सॉल्युबलेट है और उसकी जो परमेबिलिटी थी वो भी जो है उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या किया कि हमने फॉर्मुलेशन ग्रुप को बताया और ख़ुद फॉर्मुलेशन डेवलप किया। पहला फॉर्मुलेशन है 280 मिथाइल सेल्यूलोज, वो सस्पेंशन फॉर्मुलेशन दिया, दूसरा सॉल्यूशन दिया, तीसरा पैक दिया। 3 टाइप के फॉर्मुलेशन दिए और देखो फ़र्क क्या पड़ा। पहले फॉर्मुलेशन में 6% बायोबिलिटी थी, फिर 84 हो गई, फिर 91 हो गया है। और यहीं पर अगर जो फॉर्मुलेशन पे काम करना चाहे नैनो टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर से पीपल जो वांट टू वर्क ऑन समथिंग गुड विद रिस्पेक्ट टू द formulation tube, they come up with a concept, they want to work some nanoparticle which can improve it, like sky is a limit. Okay? ये है प्री फॉर्मुलेशन की एक पूरी बड़ी टीम होती है, पूरा काम होता है। ये हम लोग की लैब है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि परमेबिलिटी। अब हम बता रहे थे इतनी बात कि परमेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज़ परमेबिलिटी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, दीज आर द स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम दिखाते हैं कि ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, इसमें ये आर है, ये एन है, इसको चेंज करो तो ये मिल जाता है, मिथिल ग्रुप है। तो पहली देखो सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी इसकी सिर्फ 0.2 है, पैप 0.2 है, मगर बाद में 5.6 जैसे ही हुई तो देखो बायोबिलिटी कहाँ पहुँच गई, 24 से 84। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 24 to 84 इट हैज़ पॉइंट। So this is an incredible change, but improving the permeability of a compound. कंपाउंड की परमेबिलिटी बढ़ी और ये सब, तो ये प्रूफ करता है कि जो इनविट्रो, दिस इज नोन एज IVIVC, क्या कहते हैं, इनविट्रो टू इनविवो कंपेयर। तो आप जब इनविट्रो, जैसे किसी कोई बच्चा हमको इनसिलिको काम दिखा रहा था पीछे, उसने जो काम इनसिलिको किया है, अगर थोड़ा सा उसको अगर सपोर्ट इन वीवो का मिल जाए या उसको सपोर्ट मिल जाए कहीं, उसका क्या नाम है, इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल जाए, और इवन कोई डाटा अगर उसको रिसर्च पब्लिकेशन में मिल जाए कि ये काम हमने पहले किया है कि नहीं किया, किसी ने इसकी बायोबिलिटी चेक की, तो उसको प्रूव कर लेगा कि मैं इन सिलिको में जो दिखा रहा हूँ ये हैज़ प्रूव्ड, और फिर पेपर फ्लाई कर जाएगा। अभी तो कोई पढ़ेगा कहेगा एनी प्रूफ यू है, अगर मेरे जैसा आदमी के पास, रिव्यूअर के पास आएगा, मैं पहले ही क्वेश्चन पूछ लूँगा कि सब कुछ सही है, ये बताओ तुमने इसको कंफर्म कैसे करोगे कि सही है, सही है। This is how it looks when you talk of cell-parent dose, and this is important, this is very important. Somebody has asked this question. See, अगर ये ड्रग है, ये ड्रग कंसंट्रेशन अगर कम है तो इफेक्ट नहीं आएगा, अगर ये हरा वाला है, ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है तो इफेक्टिव है, और ज़्यादा चला गया तो टॉक्सिक है। तो गेम इज बैलेंसिंग द कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन कम है तो आप घर जाइए, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पेशेंट मर गया। और आपको एक पर्टिकुलर एफिकेशियस डोज पे अगर मिल जाए, दैट इज नोन एज एफिकेशियस डोज, एंड इफ इट इज देयर मीन्स योर लाइफ इज सेट। So it's more of a game of a juggler, you know, but there is not 2 ball, 3 ball, there is 1000 ball, you have to balance it. Okay? When I take a ball, it means lot of data you have to do. This is what I play with that. This is known as LCMS, and this is instrument we have, and you all know well what is LCMS. Is the mass spectrophotometer, and this is mass to charge ratio which we talk. और इसी के अंदर जब हम इंजेक्ट करते हैं कंपाउंड को, इसका एक फ्रंट एंड होता है जिसको HPLC कहते हैं। ये पार्ट HPLC है, ये पार्ट HPLC है, ये LCMS है। एक होता है LCMS जो केमिस्ट्री वाले यूज़ करते हैं, और एक होता है LCMS तो ये 2 अलग अलग पार्ट है। फिजिक्स पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड, फोकस ऑन something in your science which with the instrumentation people, physics and those instrument, there is a lot of job people are creating there, and this is one of the science which is moving like something.
money and something is huge. Okay, so focus on that part with these knowledge, because they usually hire product expert. So if somebody knowing a physics and if he knows these background of this biology, they are the champions for them. ओके, दिस इज इनसाइड द मास पैक। ट्रिपल कॉट के अंदर क्या होता है, ये सब 2 सिलेंडर Q1 Q2 होता है, फिर कलिजन एनर्जी कैसे निकलती है, कैसे हम ड्रग को इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद ये जो आयन फिल्टर, ये सब उसके पार्ट है। और मेरे हिसाब से कोशिश करना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट सीख लेना चाहिए। अगर कोई बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री का कोई है जान, तो उसको ये ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ये अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये बहुत काम देंगे, आजकल के स्टेट ऑफ आर्ट की ज़रूरत है। ये सब डिटेल्स है, आई विल नॉट गो। तो करते क्या है, पहले हम कंपाउंड को लेते हैं, उसको ट्यून करते हैं। ओके, ये ट्यून करके 174 उसका Q1 आ गया मेरा। अब Q1 480 इसका मॉलिकुलर वेट था, ठीक है, वो जो टूटा तो 170 पे आ गया है, और 132 दूसरे Q1, ये हमारा मेन 174 इज ए Q1। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी क्रोमेटोग्राफी सेट की, और उस क्रोमेटोग्राफी HPLC से सेट करते हैं, और ये दिखाते हैं 1.2 मिनट पे हमारा रन टाइम आ रहा है, और हम उसको 1.2 मिनट का रन टाइम रन कर देते हैं। चाहते हैं ऊपर ले लें, नीचे ले लें, हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं ताकि हमारे उतनी जल्दी सैंपल रन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा असली जब क्रोमेटोग्राफी रन होती है, तो ये हमारे दीज आर द chromatograms which we get and see the peak. This is an ideal peak. Okay, जब पीक देखने लगते हैं तो ये पीक होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल कहते थे बिल्कुल शार्प लाइक ए निडल। ओके, और इसके अलावा होते तो हम रिजेक्ट कर देते थे, लोग दिखाने आते थे। तो ये रन आता है, कंसंट्रेशन का रन होता है, इस तरह का एरिया आता है, एरिया रेशियो आता है, स्टैंडर्ड आता है, और क्रोमेटोग्राफी रन, ये स्टैंडर्ड चल रहे हैं। नीचे अननोन सैंपल्स हैं, और यहाँ पे हमने गोला इसलिए किया है कि इससे दिखा रहे हैं कि इंटरनल स्टैंडर्ड वेरी कर रहा है, तो ये हम रन को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर ये, तो ये इतने इंस्ट्रूमेंट मेरी लैब में हैं जो हम लोग काम करते हैं। ये अभी अब और अपडेटेड हो गए हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास, इतने LCMS हैं, HPLCs हैं, और ये सारे हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, किसी को अगर शौक हो मैथमेटिक्स का कोई है या कोई इंटरेस्टेड हो, तो यू इनॉलिन, ग्राफपैड, प्रेजेंट, गैलीलियो, दीज आर द गुड प्लेसेस वेयर यू कैन लुक फॉर ए गुड ऑप्शंस दे आर लुकिंग फॉर। अब एडवांस हर चीज़ होती जा रही है, तो दीज आर द वे। नाउ AI हैज़ ऑल्सो done what, you know, these ChatGPT, even Capitol, they have done, they have used these Winolin and GraphPad and they have attached to their own system. Now you put the question there, they will attach and give the answer from them also. So future is there, technology, you know, don't sit and think of it. Now tomorrow once you go after this, you should think novel, you should think new something, we can do it. और उसी में पैसा है, ये नहीं है कि हम चले जाए ये कर ले, ना ना ना, कुछ ऐसा करो अलग सा। नाउ देयर इज अ मेटा आईडी, दिस इज अ ब्यूटीफुल साइंस। मैं बहुत सोचता रहा दूं कि ना दूं, फिर बाद में मेरे आई वॉज हैविंग समथिंग विच आई वॉन्टेड बट आई रिमूव्ड इट ड्यू टू सम। दिस वॉज द पेपर आई पब्लिश अराउंड 12 years back or 13 years back. I published this paper, and this is a meta ID paper, and these are the how all the structure elucidation and how the number which we get, what are the peak which we get, how much the masses we are getting. What is meta ID? You know, meta ID is nothing. When you put a compound, it is get metabolized. When it metabolize in a form of a small, one of the metabolites. Okay, and compound do have lot of metabolites. Now our job is to understand what are the metabolites coming, because they will remain in the body and they can be toxic. Your parent is not toxic, but after metabolism it is toxic. Your CIPS metabolize the compound and it makes metabolite. So your job is metabolite identification. A beautiful science, a fascinating story of meta ID, and if you get an expertise, there are very lesser expertise in the world. So if you climb on this expertise, you guys will be new to this field and people will love to hire those guys. But that needs a knowledge of chemistry, needs a knowledge of biology, needs a knowledge of
instrumentation. Now the last part is safety. Okay, we talked of activity, we talked of drugability. Now the last topic is toxicology. All things are poison, you all know well, and nothing is without a poison. Only the dose permit something not to be poisonous. तो कितना खाते हो, शुगर भी 1 चम्मच खाओ तो ठीक है, पूरा खा लो तो प्रॉब्लम है, ठीक है. तो हर चीज़ टॉक्सिक है, डोज डिसाइड्स. दिस इज हाउ द पाथवे लुक्स फॉर इन ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट. पहले हम इन सिलिको, आज कोई बात कर रहे थे कि इन सिलिको एनालिसिस कर सकते हैं. स्टिल इट्स टू नेसेंट, पीपल आर ट्राइंग, दे हैव सम डाटा, बिकॉज द टॉक्स के साथ अच्छी क्या है, उस पर डायनेमिसिटी कम है. जो टॉक्स होना है वो होना है. लीवर में टॉक्स है तो ALP बढ़ेगा और दूसरे लीवर एंजाइम्स बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ ये आगे चल के अगर कोई बहुत ज़्यादा हिस्टोपैथ में जाके देखोगे तो कैलेंजियोफाइब्रोसिस हो जाएगा, ये सब होगा, ये होना है. तो अब वो टॉक्स वाले क्या करते हैं कि उनके पास डाटा कम है, इफेक्ट का डाटा कम है, कॉज का ज़्यादा हो तो अलग चीज़ है. तो व्हाट दे डू, दे मेक एन इफेक्ट एंड दे कोरिलेट विद द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड सी कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था या ऑक्सीमिथिल ग्रुप था या नाइट्रोजन ग्रुप था या डाइमिथिल ग्रुप था, ये कैसे ये ग्रुप जो है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है. तो उनका जॉब हो गया है आसान और उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी बढ़ गई है. देखो प्रेडिक्टिबिलिटी की प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ डायनेमिसिटी ज़्यादा हो, टॉक्स की चांसेस ज़्यादा है, मगर टॉक्स एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इट्स नॉट ए केक वॉक. उसके बाद डिस्कवरी में हम लोग नॉन GLP पहले ही चेक कर लेते हैं कंपाउंड है कि नहीं. फिर IND में इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हमको GLP सेटअप चाहिए होता है, उसमें जो है हमें जीनोटॉक्स चाहिए होता है, इनविट्रो टॉक्स चाहिए होता है. फेज 2 में इन वीवो करना, क्रोमोसोम टेस्ट, डैमेज टेस्ट, MTD भी आज मैं जिससे पूछ रहा था वो भी एक टाइप का हम लोग करते हैं यूजुअली टॉक्स में. फिर फेज 2, फेज 3, आई डोंट वांट टू गो इन दैट. रोल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज नोन एज अ सेफ्टी मार्जिन. हम NOL निकाल लेते हैं फर्स्ट ह्यूमन डोज में, अलाउ नहीं करेगा रेगुलेटरी अगर हमने उसको बताया नहीं कि आपका टॉक्स कैसा काम कर रहा है. स्ट्रैटेजिकल टॉक्सिक प्लानिंग, ये सब डुअल स्पीशीज, 2 स्पीशीज में टॉक्स करना पड़ता है, एक रोडेंट और एक नॉन रोडेंट. रोडेंट में हमें करना पड़ता है या तो हम रैट में कर लें, माइस भी लोग नहीं पूछ रहे हैं, रैट ज़्यादा क्योंकि उसके डाटा बहुत है मार्केट में, और दूसरा या तो डॉग में कीजिए या मंकी में कीजिए. 2 टॉक्स अगर नहीं करेंगे तो आपको क्लिनिकल ट्रायल कोई करने नहीं देगा. ये टाइमलाइन होती है, शुरू में 102 दिन सिंगल टॉक, 7 to 28 डेज में क्रोनिक टॉक, और उसके बाद 90+ डेज की हमें क्रोनिक टॉक्स स्टडीज़ की लॉन्ग टर्म करनी पड़ती है. की एंड पॉइंट मेजरमेंट, एथिकल, ये सब इम्पॉर्टेंट है. ये मेन पैकेज है कि इतना पैकेज हमको देना पड़ता है ये सारी स्टडीज़ करके. जब सारी स्टडीज़ हो जाए, टॉक्स अच्छा हो, उसके बाद भी ये डाटा हमें कैलकुलेट करके उनको देना पड़ता है. तब ये ऊपर जो है वो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, US, EU एंड जापान, इनमें कहीं भी दो तो ये सब रिक्वायरमेंट है. और आई डोंट वांट टू गो इन दैट. This is a good news for everyone sitting here that now FDA announces to phase out the animals testing requirement for the monoclonal antibodies and the other drug. Subsequently, it will come back to other drug also. अभी monoclonal में है, तो ये रोड मैप पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, अगर कोई बहुत फैसिनेटिंग है, ऑर्गन चिप आसान है, सस्ता भी है ऑर्गन लेना, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी आपके पास इतने अच्छे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के और इन सब के लोग हैं, इनको साथ आप काम करो और कुछ नया सोचो कि हम कैसे सिग्नलिंग उसकी ले लें, किस तरह कर लें. और एक क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट अगर कर लेगा ना, आई थिंक वी कैन ब्रेक द आइस. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस गोइंग ऑन. फिर उसकी फिजियोलॉजी एनहांस हो जाए, लिमिटेशन ऑफ फोकस क्या है कि हम एनिमल टेस्टिंग को कम कर लें, और FDA अब सपोर्ट कर रहा है. ये डाटा अगर उसको दे दो तो आपकी टॉक्स स्टडीज़ कम कर देगा, ज़्यादा नहीं, कम कर देगा, रोकेगा नहीं मगर है. उसके बाद ये ह्यूमन डोज जो हम लोग करते हैं, तो ये मेरा काम है कंपनी में. अब तो हम जिस लेवल पे हम यही काम करते हैं, हम ये बताते हैं कि आप कितना पहली बार ह्यूमन को डोज दो तो बचेगा, मरेगा नहीं. दिस इज़ नोन एज फर्स्ट इन ह्यूमन डोज कैलकुलेशन. ये हम लोग, हमको रैट से मिल जाता है कि NOL कितना है, डॉग से मिल जाता है कि कितना उसकी STD है,
उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये हमारा कोई ड्रग होगा, हमने तो नंबर सब बदल दिए हैं, तो इसलिए जो है ये कि आप 20 mg दे दो तो वो सही रहेगा। 20 mg मरेगा नहीं। अब उसके बाद 20 mg जब 3 पेशेंट दे देते हो तो 3 पेशेंट नेक्स्ट उसके 28 डे की साइकिल होती है, किसी की 21 डेज की, डिपेंड कि आप क्लिनिक में कैसे यूज़ करोगे। फिर आप उसको कोहोर्ट बोलते हैं, 3 का कोहोर्ट देते हैं। उसके बाद देने के बाद एक नेक्स्ट कोहोर्ट आता है, फिर आप 20 से 40 में चले जाते हैं। 40 से अब आप अपने डाटा से देखते हैं कि 40 जाना है, 60 जाना है कि 80 जाना है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाते हो 80 में। जब तक कि आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखते आप जाते रहते हो, और एक स्टेज पे जब एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं तो आप रुक जाते हो। उसके भी 3 पेशेंट और करते हो, करने के बाद उसको रोक देते हो। फिर उसके बाद डोज एक्सपेंशन स्टडी होती है, वहाँ फेज़ 1 आपका क्रॉस होकर फेज़ 2 शुरू हो जाते हैं। और फेज़ 2 के अंदर जब MTD RP2D कहते हैं वो जब रुक जाता है तो फेज़ 2 में आप एफिकेसी देखते हो। अगर एफिकेसी अच्छी है तो फेज़ 3 में एक बड़ा सा ग्रुप लेके किया जाता है, डिफरेंट प्लेसेस का ग्रुप, वो अच्छा है तो आपका ड्रग समझो सक्सेसफुल हो गया, और आप फिर फेज़ 4 में जाते हो, फिर एक नई स्टोरी है। Important message, it takes a village to create a file and IND to FDA on any regulatory। तो अगर एक ड्रग बनता है तो उसके लिए समझो एक शहर बसाना हो गया, ठीक है ना, तो एक ये शहर बसता है, इतने सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है GLP टॉक्स की, वो हम अब नहीं करेंगे। So we already spoken much more on it. So the thing is, we reach to the conclusion, first and foremost we know how the molecule are made, how the chemistry works, that already been explained, what are the stages of drug discovery, why there is attrition in drug discovery, what are the reasons for that. There is another arm to it, one is the activity, other is the drugability, and third is the safety. We talked of activity morning session and yesterday also, and it will be continued sometimes, and others will also be working on it now with some specific target like a cancer and something he will be working more, talking on to you guys. And then is the drugability, where you absorb the drug, it get metabolized, it get excreted, it get distributed, then you are asked of ADME. And the third portion which we talked of, it was safety, which we talk of a tox, how the tox is done, what are the reasons for that, what are the coming signs which people are advocating these days with the regulatory stuff. And then we talked of a regulatory, how it is easy to. So most importantly, it's a cumbersome process with a lot of science, with a lot of cross-functional activities involved in it, and lot of interdisciplinary focus on it. And I think we can keep to the rest today with the next lecture coming up. Any question, feel free to ask. Yeah, I'm there. Tell me. Come again, I just missed it. Or absorption in the body? Both. Sir, so how can we, means if we change the formulation? Yeah. So what can we do to increase the absorption in the body? Yeah, actually, first you should know the problem. Okay, problem is whether it's an absorption, and absorption can be sorted out why it is absorption. There can be two reasons. One is it's not permeable, compound is not permeable, it is not going inside. So you need to make a compound permeable. So what we usually do, where I usually tell to many people, nanotechnology and other, we make a micelles, we make something in such a way that the compound is encapsulated inside and it goes and get opened. Okay, that's a one way, easy way. Second is whether it is due to the transporter effect, means your drug has been thrown out of the system. There is a PGP, you know, PGP, have you heard? Have you heard of PGP transporters? There are two types of transporters. I told you, one is the active, another is the passive transporter. There are some active transporter, which is the motor transporter, which throws the compound outside, and there is a lot of things. So important is where the problem. Problem is absorption. What is the problem? Then you understand, you can formulate in such a way so that it can be given, or it is going inside the body and getting precipitated out also. So that is dissolution issue.
So you have to understand. So this is all a story, millions of dollars people spend just to make sure that know the problem, and there are the solution which are there, where the new field comes and they do it and you sort out that issue. No problem. Yeah, go ahead. All drugs are not synthetic. Who says? The structure you are developing or trying to modify different Yeah. functional groups and trying to figure out that which structure will be suitable for druggability. But at that aspect, how we are taking help from plants, that different components, we know medicinal plants are there. So that is what the question which I answered earlier. Somebody was asking from that you have to get an active constituent from that and most of the best cancer drug example which was Gleevec, if I remember, or something, which was done from a plant extract only. So doxorubicin was one of the example which is there. So important is get the best the right chemical entity which is acting on it, and you have to do the same studies. Okay, any questions? Yeah. So nowadays focus is being given to environmental health. So is there any such aspect being covered during the drug development besides the toxicity of human health? Yeah, we are all succumb to that pressure from government also. We make sure that our chemicals, especially radio chemicals and all, are put in we follow the rule from the Bach society they give. So that's a given thing. You can't live in India. That's the biggest problem than anything else. So you have to do it, and we try to maintain as much as possible. All right, so Thank you, sir. थैंक्स टू यू। लेकिन अगर आपने ये तसव्वुर किया था कि आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं तो आई वुड डिसएग्री विद यू। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? सो लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड, कम ऑन। So you qualify as a teacher. Wonderful. Thank you. It's a good compliment from you. Yes, take it. All right, so we are moving towards the last session, the most difficult session. You are tired, sleepy. People have come from Varanasi, and you came today morning, right? Okay, so, but I can assure you, you will all be able to connect to this lecture. So we have been talking about the drug discovery and drug delivery in general, right? Today I'll try to give you a flavor of specifically a disease called cancer. How many of you are familiar with cancer? I think all hands should raise up, right? Is there somebody who doesn't know CANCER? Everybody knows CANCER. Cancer is a disease, and unfortunately, some of you would have experienced it through somebody whom you know, right? So I took up my career in cancer research because of these reasons. Otherwise, I did vaccine development in my PhD. I had developed a vaccine during my PhD thesis. But then I moved to doing the cancer research, and for the past 22 years, I'm doing cancer research, that kind of focus. So I'll try to bring some cancer story from the drug development perspective, and here's an outline that I'll be talking about. So within this outline, because cancer is a big field, it's a very diverse field. So I'm trying to, while I was looking at my presentation, it was hard to skip क्या रखूँ, क्या छोड़ूँ, क्या चीज़ बताऊँ, क्या चीज़ न बताऊँ, because there's a lot of things that look interesting and I want to transfer it to you. So introduction, I think we can have a quick overview that from you guys. What is cancer? Can anybody help me with that? Uncontrolled growth of cell. Anybody else has any other definition?
Everybody says the same, right? So uncontrolled growth of cells. But this uncontrolled growth of cell, if it just forms a tumor and it stays in its place, it's not cancer, right? It's just like warts. कभी कभी मसे हो जाते हैं ना, मसे भी यही हुए, स्किन सेल्स जो है अनकंट्रोल ग्रोथ हुई, but then they stopped. They did not spread. So if they don't spread, they are benign and they are not cancer. So the definition is incomplete when you say uncontrolled growth of cells. It's uncontrolled growth of cells with if it is spread to other locations, then it is called metastasis. If it is even confined within the same place, but it is spreading, it continues to spread without any kind of intervention, then it's cancer. Then it is qualifying as cancer. So there was this definition, as Dr. Imad was saying in the morning, it's not just one disease, it's a kind of a syndrome. There are multiple diseases. So it was hard to find out how to say what causes cancer or how can we define a cancer cell. So then there was a seminal paper that gave up the hallmarks of cancer. Then how do we say that this particular cell is cancerous? And then every decade, this is the third one that they have come up with in 2021, before that 2011 and then 2001. So for 3 decades it has been coming up by Hardy Weinberg, and they have been increasing over the time. So if you look at this, I will not rush through the pictures unless you tell me to do so, because I like to explain the slides fully. See here, nothing. Okay. Let me see. Yes. So if you look at these features, which are called the hallmarks of cancer, first is evading the growth suppressors. So in cancer cells, it's like a vehicle with a brake and an accelerator. So both them are needed for the vehicle to move and prevent any accident from happening, right? So similarly, we have got oncogenes and we also have the tumor suppressor genes. Oncogenes are like accelerators and tumor suppressor genes are like brakes. So, and then we have got the growth suppressors. So there are things in the body that suppress the growth. They say, okay, you have got enough, now you slow down. But cancer cells are able to evade these growth suppressors. They also evade the immune destruction, because at a point they become non-self. They are not like the normal cells. So immune system tries to filter out these cells, but they are smart enough to avoid those immune destruction as well. They have replicative immortality. That means they are continuously multiplying. Can we tell me the portion of the chromosome which tells when to stop replicating? Exactly. So telomeres are the indicators that how many times a cell can divide, because every time it is getting shortened and then ultimately cell is doomed to die. But in case of cancer cells, they have got a mechanism by which they keep elongating the telomere and the cell continues to grow. That's the replicative immortality. Then tumor promoting inflammation. So there's a inflammation that helps these cells to grow. This creates an environment which is helping them to grow. And it also helps them to invade and metastasize. Invasion means going to different territories and landing there and sprouting up new tumors. They also need, when they reach to new places, they need more supply, right? If somebody is going to inhabit in a desert, they will need the supply also. How does the supply come from? Increased vasculature. The new blood supply is coming in. New blood vessels are forming in. I think it will look like more of a cancer biology class for you. But no, I'll move to the drug development soon. Then you also have the genome instability and mutation, because a normal DNA would function normally. So it has to be something different that cancer cells have to develop in their DNA by which they can have these capabilities. Then also they resist the cell death. So again, the markers like apoptosis, autophagy, senescence, necrosis,
all these are being avoided by the cancer cells. And the cellular metabolism, they deregulate the cellular metabolism. The normal process of energy generation is compromised. Warburg effect. They adopt a mechanism of energy production which is the least smart method. That's called Warburg effect, by which they are generating energy, and the reasons are still unknown. Right? So they have been summarized into this picture where there are senescent cells as well, and polymorphic microbiomes, which is the gut microbiota that we are talking about. And there are also some extra DNA level changes which are known as epigenetic changes that are also happening there. And plasticity. Plasticity means they are able to change their shape, their format, and this helps them to grow, survive, and evade the immune system. This is the plasticity. Again, I'll be happy to stop and answer anything that you have. Plus, you can also have talked about these tomorrow as well. So once we know what defines cells, then we have started to take them one by one and hit them with the targets. So if you remember my yesterday's lecture, the first thing in the drug discovery was target identification. So first thing is to know where to strike. Drugs तो तब आएंगी जबकि पता होगा कि कहाँ पे हमें उनको hit करना है. So for target identification, we have to know what the cell is looking like, and for all of these hallmarks, now you have got the EGFR inhibitors for sustainable proliferative signaling. So they are inhibiting each of the hallmarks here. So what all we discussed, now there are different classes of drugs which are acting on these hallmarks to stop the growth of the cancer cell. Clear? Now this is a slide which helps to tell you about what are the major risk factors for cancer. So I'm sure all of you are aware of these, that tobacco is one single agent that is causing a lot of cancer, and this has been established. Then you have got different lifestyle stuff as well as some of the chemicals and radiations, etc. I will not go much into the epidemiology, as all of you acknowledge that this is a big problem, and even in countries like ours, this is emerging. The recent report from Apollo is saying that India is picking up at pace with the developed countries. So we are developing, and we are also taking the statistics of those countries, because usually cancer was supposed to be the disease of the developed countries, but now India is also picking up and going there. And most of these cancers, so this is called incidence, that how many cancers are developing, and then mortality, how many people are dying because of those cancers. So here is some data here, and most of them you can see is upper digestive tract, lung is supposed to be the most biggest killer, breast cancer, colorectum, liver, prostate, and others. This is the global scenario, but we have got the similar data from India as well. Right? I don't know why this is not right. So we have got here introduction and challenges of treating cancer, and now we'll move to the next one, which is what are the scope of doing research in cancer. So one of the biggest problem in cancer is the heterogeneity. Right? Heterogeneity means that cancer is not one. Sorry, this is. Yeah. Heterogeneity means there is not one target. We think that we found a target, but no. The cancer cells are all different. Even in one tumor in one place, the cells are different. And now this is called intratumoral heterogeneity. Now you talk about tumor in one place versus tumor in another place. They are also different. This is called intertumoral heterogeneity. Then you have got one patient is different from the other patient. This is interpatient heterogeneity. So there are several levels of heterogeneity which is making cancer so complex that even after so many years we don't have a proper cure.
So tumor heterogeneity is one aspect. Then we have the tumor microenvironment. The environment along with the cells that are different to begin with, it's adding to the heterogeneity of these cancer cells as well. So the environment is helping them to grow, and environment is making them survive even in the presence of the immune system. So it supports the tumor growth, invasion, immune evasion, and metastasis, which is the spread of the cancer to other organs. This is a snapshot of what are the different cells along with the cancer cells that make up the tumor environment. So you have got here the immune cells, dendritic cells, fat cell, apoptotic cells, which are the normal dying cells. Also, you have got the natural killer cells. So there are many cells that are coming together to help the cancer to grow. Right? So this is another way of looking at it. Is the same. These are the components of the tumor microenvironment. It also involves fibroblast, extracellular matrix, vasculature, which is the new blood vessels, cytokines, growth factors. All of them are helping the cancer to grow and helping in the heterogeneity of the cancer, which makes it difficult to target. But cancer cells, we develop drugs, and cancer cells are really smart. So even if we are with all these complexities, we are able to find a drug and target them, shoot them. They develop new ways to, they learn, and they develop new ways to evade that in the next time. And that is what is known as relapse or drug resistance. So there are a lot of patients who are known to have first cycle, they show very good results, second cycle, third cycle, now resistant, the drug is no more working. Same drug which was effective earlier is no more effective. That's another problem with the cancer cells. So it is due to the drug resistance, and there are several mechanisms to it, because the tumor is evolving in terms of its own hallmarks as well as the environment around it. It keeps changing. So earlier there was a thought कि अगर हम ट्यूमर की ब्लड सप्लाई काट दें तो ट्यूमर मर जाएगा, right? This was the idea. But it was observed that if you cut down the blood supply by using some inhibitors, it becomes more aggressive. Now they are not there; they are spreading to other places. जब तक blood supply थी तब तक तो वहाँ रह रहे थे, अब वहाँ से blood supply काट दी तो they are not spreading. So it was more disastrous. So that's why this drug resistance and tumor evolution is another big problem that needs to be tackled. And this drug resistance is coming through different methods. It could be due to mutations in the DNA. It could be because the drug is pumped out. It could be due to the inactivation of the cell death pathways, or it could be because of the better repair mechanism that these tumor cells have. So it could be many mechanisms by which this cancer cells are developing their resistance towards the drugs. So drug बनने के बाद भी काम नहीं कर रही है. अभी आपने जितना भी सुबह से शाम तक सुना, बन गई सारी toxicity studies हो गई, सब हो गई, but cancer cells are smart, they develop resistance. So we have to keep in mind that we have to treat in such a way that we are not making the cancer resistant, rather we are completely killing it. Yes, go ahead. Yes. So what happens when you are cutting down the cell supply, these cells, these tumor cells, they evolve, and the one that survive, there's one cancer stem cell theory here, that they survive, and the ones that are surviving, they spread, and now it's more aggressive. So I'm telling you the clinical story, because as soon as you cut down the supply, it's not that everything is all the cells are killed. I mean, it's like a ball. So all of them, they don't kill at once. The ones that survive, they are more dangerous. Yeah, they learn how to utilize less energy. They go dormant. Yes, and this time they move to other places and find a new destination.
Nevertheless, we cannot sit down and say we can't do anything. We have to go for finding out new ways to combat this heterogeneity, this drug resistance, and that's where the drug development process continues. Is it the same for cancer drugs? What do you think? Finding a target, doing the preclinical phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, is going to be the same for cancer drugs? I mean, the stages are the same. The process is the same, but everything is different when you are talking about the cancer drugs. Starting from the target identification to the final phase 4 studies, they're all different. Right? So for the target identification, we can have multiple ways to do the target identification, and most of my work is here for the target identification. We try to find out the genes that are responsible for these cancers and how can we target that. But beyond that, it's the work of the chemists to synthesize the molecules which can hit the target, or the biologists who can make the antibodies to kill that target. But most of my research, that's for identification of these targets. So it involves different omics. That's another thing that I would like to bring up, that once we say that a cell is transforming from a normal to a tumor cell, it is not just a function of DNA. Mutation ho gaya, disease ho gayi, right? Rather, it's a function of many molecules that are present inside the cell, which could be DNA, RNA, protein, metabolites. And when you study them all together, it's known as omics. Genomics is about the DNA, transcriptomics is about the RNA, proteomics is about the proteins, metabolomics is about the metabolites, and there are many more omics that needs to be combined together to understand one single cell. And then only we can come up to the right target. I always tell the story of this elephant. I'm sure some of you might have heard about it. कि एक अंधों का एक गांव था, उसमें एक हाथी आया. अब वो रात में आया तो आवाज़ हुई, तो सबने जाकर के उसको देखना चाहिए है क्या ये चीज़, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है. तो सबने उसको जो है, किसी ने उसको छू छू के देख के समझने की कोशिश करी. फिर सुबह सब बैठे कि भाई क्या है, तो हर एक ने अपना अलग डिस्क्रिप्शन दिया. किसी ने कहा कि ये एक चट्टान की तरह है, बिकॉज दे टच द ट्रंक. कह रहे नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये पंखे की तरह है. उसने उसके जो है कान छुए थे. उसने कहा तुम लोगों ने लगता है कोई और चीज़ देखी है. मैंने देखा वो तो एक सांप की तरह था और रस्सी की तरह था. हालांकि द फाइनल पिक्चर वॉज, इन सब का एक मजमुआ था, इन सब का, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फीचर्स. एंड ऑल ऑफ देम वर थिंकिंग दैट वी फाउंड, we understand the animal or the thing that has entered into our village, but all of them were wrong. This has been happening in cancer research as well. People who found the mutations 20 years ago, they said, we found it. P53 mutation, it is mutated in the cancer cells, we are going to fix it, cancer done. Wrong. Then they said, no, this gene is overexpressed, we'll bring it down, we have found the gene that is causing cancer, we found it. They were wrong. Proteins, phosphorylations, glycosylations. So I'm trying to sell this idea that it's a combination of all these things that is known as multi-omics, which can define the cancer cells, and then only you can find a good target that can defeat cancer as we know it. And for that, we need to have the full idea of all these omics, and then there's something called biomarkers. I'll be coming up in the later slides. And that leads to personalized medicine. Because as I told you, interpatient heterogeneity is a lot there, so we cannot apply one-size-fits-all approach in cancer at least. But unfortunately, we are not yet there. So target validation, I think you have heard about it a lot. We have got animal models, expression profiles. There are different ways of doing the target validation. Target validation means पता करना कि क्या ये वाकई जो हमने टारगेट मालूम किया है ये सही है भी कि नहीं है. इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, एंड वी डू दैट. आई थिंक यू heard a lot about the target validation. Then it has to be an iterative process.
So we learn every time we take something to the clinic, to the bench side, we see the response of the patient and come back and feed it into the clinical protocols as well, so that experimentation and therapy, they keep on feeding each other. And that's where the AI is helping a lot, and continuous learning models. And this is also, these multi-omics approach is also possible because of the AI stuff. Otherwise, how many bases are there in our DNA? My students should tell at least. No, bases, ATGC, I'm not talking about ATGC. How many are there? There are 4 types. Somebody said a number. 3 billion bases are there. So just imagine now we can sequence this. We can say ATGC 3 billion, and this is one set of DNA, how they are arranged. And then you have got the RNA, then you have got the proteins. So all these data points, they become millions. So it's beyond human comprehension to identify a target and all this. So machine has to come in and help us in finding out. Right? So next the pattern of clinical trials, once we have got the target, we have got the lead molecules, we have got the target validation, we go into the clinical trial. I'm skipping those chemistry and formation of the drugs and stuff. I'm going straight into the clinical trials. That suppose these chemists and everybody we found the target, they synthesized the molecule, and they found that preclinical was there good, then how do we move on from here? And again, you have heard about these phase 1, 2, 3, 4 trials multiple times. I hope now you memorized it. There was one more phase that I talked about day before yesterday. 8-0, very good. So in cancer, there are other type of trials. As I said, process same, but story is different. There's something called umbrella trials. Umbrella trials में करते हैं कि एक disease कैंसर है, उसके अंदर सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं. सब ग्रुप्स मतलब एक किसी को अगर कोलन कैंसर है, उस कोलन कैंसर के अंदर कुछ बायोमार्कर्स निकाले जाते हैं और उन बायोमार्कर की बेसिस पे पेशेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है. जैसे कोलोरेक्टल कैंसर में इस वक्त जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो है कंसेंसस मॉलिक्यूलर सबटाइप्स. CMS 1, 2, 3, 4. There are 4 types. And then you drug them accordingly. You don't drug all colon cancer patients with one type. No. You do subgrouping. And after subgrouping, you give them the dosage and drugs separately. So they are given different types of drugs for the same disease. This is called umbrella trial. And the reverse of it is called basket trial. So one example of this umbrella trial is lung map trial. This is an example that has been done. They are trying to find out which subgroup of the lung cancer patients will be benefited by which drug. So now lung cancer is separated into subgroups. So and it's basically the genetic makeup that is being considered, and then there are different sub-studies here. And this trial has been going on for now more than a decade to collect data and finally come up with a protocol for different type of patients. And the opposite of this is the basket trial. Basket trial is any person who has having a particular mutation, for example, BRAF mutation. BRAF is the gene. It has got a mutation, valine converting into glutamic acid at position number 600, V600E mutation. So anybody having this mutation will be treated by using a particular drug, whether it is lung cancer, whether it is breast cancer, whether it is colorectal cancer, it doesn't matter. So it is tissue agnostic. Tissue does not matter, rather that particular mutation matters. So I've given here the example for the basket trial. The BRAF inhibitor in patients with BRAF V600 mutation. Now this mutation is present in melanoma, the skin cancer, colorectal, thyroid, non-small cell lung cancer, and even some other diseases, Langerhans cell histiocytosis and Erdheim-Chester disease. So if anybody has got this particular mutation, they will be given this drug.
right? So it's tissue agnostic. Then there's another type of trial. So umbrella trial, basket trial, then N of 1 trial. Why? Every patient is different. N of 1 का क्या मतलब है कि एक ही पेशेंट, वरना यूजुअली ट्रायल्स होते हैं, आपने कल नंबर्स क्या देखे थे, फेज 1 में कितने होते हैं? फेज 1 10, yes, 10 to 100, yes, I heard 10,000. And phase 2 100, phase 3, और इसमें यूजुअली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स चलती है भाई, 10 पेशेंट थे, 10 में से 6 में अगर अच्छा रिस्पांस आ गया, ड्रग इज गुड. बट ये सोचना है कि जिन चार लोगों में नहीं आया था, व्हाट वाज द रीजन देयर. या लुकिंग ऑन द ऑपोजिट साइड, सपोज 10 लोगों में से 2 में रिस्पांस आया, स्टैटिस्टिकली तो वो ड्रग फेल हो गई, 2 out of 10. बट उन 2 में रिस्पांस क्यों आया? व्हाट वाज देयर? व्हाट वाज विद दोज पेशेंट्स? So this is being captured in N of 1 trials. So every patient is a trial in itself. इसके लिए करते हैं कि they take 2 drugs. पहले ड्रग A दी, रिस्पॉन्स देखा, ड्रग B दी, रिस्पॉन्स देखा, दोनों में से जो बेहतर लगी उसको कंटिन्यू किया. So this is how they use the same patient as its own control. Otherwise randomized control trials वगैरह जो होते हैं उसमें बड़े बड़े कोहोर्ट्स लिए जाते हैं और फिर स्टैटिस्टिकली अगर वो सही निकला तो माना जाता है, नहीं सही निकला तो द ड्रग इज किल्ड. So this is the traditional approach: target validation, compound screening, lead optimization, preclinical testing, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and then post-marketing. Whereas in N of 1, there is already pre-existing platform knowledge that what are the mutations in the patient, what is the protein profile of this patient. Then the design is, and this is pretty much expedited. If you can see, the timeline here is much lower. So you start testing 2 drugs, and then these 2 drugs, you found that this drug is better. Or there, in some cases, they also do 3 drugs, and then you say, okay, out of these 3, this one is good. We'll start with this for this patient. Right? This is N of 1 trials. And then I told you this story yesterday. And even for the screening of the drugs, there's a fly avatar that I had. My friend, he is now relocated to Ireland. He used to work in Mount Sinai in New York. He developed these Drosophila. So we used to sequence the patient का जीनोम पूरा सीक्वेंस किया, उसके देखिए कौन कौन सी म्यूटेशंस थे, और उसी म्यूटेशन के साथ फ्लाई एवाटार्स बनाए ड्रोसोफिला के. तब क्या हुआ, हमारे पास सोचे छोटे छोटे ह्यूमन बीइंग के जीनोटाइप हैं. देन वी टेस्ट द एंटायर FDA अप्रूव्ड ड्रग्स. उसमें से पता लगा 5 ड्रग्स जो अच्छा काम कर रही हैं. वी हैंड इट ओवर टू द डॉक्टर कि दीज आर द 5 बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस पेशेंट, हाईली पर्सनलाइज्ड. नाउ दिस कंपनी इज विवान थेरेप्यूटिक्स के नाम से एक कंपनी अब लंदन में है. लॉरा, she has bought this technology and now she is doing it. But the major hurdle here is money. I wanted to get it for some of my friends, patient here, but I couldn't get it. It was very expensive. It starts from $100,000 starting. So this is another aspect of drug development which we haven't covered in this, the economics. That many of the drugs that are available, they are not accessible due to money issues. So then here there's an example of this fly avatar models where they have utilized a patient from acute myeloid leukemia, and उसके पास यूजुअली ये उस तरह के पेशेंट्स में करने की इजाज़त मिलती है जिनके ऊपर सारे अदर ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं, फेज 4 वगैरह में पहुंच गए. तो एक AML पेशेंट था जिसके सारी थेरेपेटिक अप्रोचेस के ऑप्शन ख़त्म हो चुके थे. इसके पास ETV6 and TREC2 ये जीन फ्यूजन है जो किस पेशेंट में था. सो देन दे प्रिपेयर्ड द फ्लाई अवतार्स एंड दे फाउंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर ड्रग लारोट्रेक्टिनिब वाज द बेस्ट ड्रग दैट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड. सो यहाँ पे अब अप्रूवल का चक्कर भी खत्म. सो बिकॉज दीज ड्रग्स आर ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द FDA.
तो टॉक्सिसिटी स्टडीज़ इनकी हो चुकी हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स इनकी हो चुकी है, DMPK इनकी हो चुकी है, तो दे आर ready to use in the patients. All you are doing is knowing which patient is going to get the best response from which drug. And the patient achieved the partial remission also. So it was a success story. For doing this, there is a very big market, very big area of biomarkers. Biomarkers हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमें किसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बता रहा हो. ब्लड प्रेशर इज़ अ बायोमार्कर, तो कि आपकी कार्डियक हेल्थ के बारे में बता रहा है. ब्लड शुगर, दैट्स ऑल्सो अ बायोमार्कर. तो इस तरह के बायोमार्कर डिस्कवरी जो कि स्पेसिफिक हेल्थ स्टेटस को बता सके, दिस इज़ वेरी मच नीडेड. पर्सनलाइज मेडिसिन बगैर बायोमार्कर के हो ही नहीं सकती. कैसे पता करेंगे कि इस पेशेंट की क्या खास चीज़ है जिससे कि हम इसको टारगेट करें. सो बायोमार्कर्स आर देयरफॉर, बायोमार्कर डिस्कवरी इज एन एंटायर कैरियर. And fortunately, we have done some of these studies, and we have these two genes, MUC4 and ADAM12. These were the genes which we found as biomarkers for metastasis. We found out that जो colorectal cancer cells हैं, वो जब primary से metastasis में जाते हैं, तो ये दोनों genes हैं, अगर आप इनको measure कर लें, तो you will get to know कि whether they will be metastasizing or not. तो ये चीज़ें biomarker discovery is very important, and it goes hand in hand with the drug discovery कि किसको सही drug देनी है. Next we come on the regulatory and ethical considerations, which is always there. क्योंकि कैंसर में this is again a big problem, as I just told you, कि phase 1 trials भी किसको दिए जा रहे हैं, N of 1 trials जो किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं. So I had a team of surgeons, pathologists, then we have the molecular biologist, endoscopist, and it's very hard to convince them कि इस पेशेंट के लिए ये ड्रग ज़्यादा बेहतर रहेगी. कहता ना, अगर 5-fluorouracil चल रही तो वही चलाएंगे हम. हाँ, जब सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे तब आप जो कह रहे हैं तब सुनेंगे. Because there is a lot of regulatory and ethical problems that they have to consider, and it's valid. I would not say that they are wrong, but yes, it creates a lot of problems. Like it's written here, patients are the greatest sufferers, being denied the chance, hope of research, therapy, and paving way for future. So इसलिए mostly it's voluntary. So beside economics, regulatory or ethical considerations they are big impediment. But still, there are a lot of scope. There are therapy designations for different targets, like repurposing of the targets. And if we have got substantial evidence that this particular therapy is going to work, then it can also be accelerated by the FDA. All we need to do is to show some good evidence. Orphan drugs के बारे में बताया गया था. कुछ drugs ऐसी हैं जिनका target पता ही नहीं है. Drugs तो बन गई, active हैं, selective हैं, बन भी गई, soluble भी हैं water में, लेकिन उनका target क्या नहीं पता है, काम करती हैं ये पता है. तो इस तरह की drugs भी use की जा सकती हैं. तो एक तरह के there is a treasure that is being already made where you keep these molecules ready. If they can be used for human intervention, they don't have a toxicity, they have got good renal clearance, all those DMPK and PK studies वगैरह करके रखी जाती हैं, so that they can be utilized immediately. So then the review process could be faster. So there are different types of trial designs where standard is this one, which takes a long time. But if you have got an orphan drug, or it could be fast-tracked, accelerated approval, priority review, breakthrough therapies. This is all from US FDA, but there would be similar mechanism by CDSCO in India as well. And this is a very important slide that most of the time, anybody has any idea कि clinical trials होते कैसे हैं? कुछ है idea किसी को? जी बताइए. हाँ, मतलब एक अगर हमने कोई ट्रायल करना है तो यूजुअली होता ये है कि देयर इज एन अनाउंस, इट्स रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट. फिर इसके बाद अगर किसी को चूज़ करना है, किसी को एनरोल करना है, तो अपने प्रैक्टिशनर के थ्रू जा करके फिर वो एनरोल करवाता है. राइट, दिस इज द प्रोसीजर. बट मेनी टाइम्स
there are sections of the society which get missed, right? जो बेचारा कहीं दूर देहात में गांव में रह रहा है, उसको क्या पता कि वेबसाइट पे कौन से ट्रायल्स हैं, मेरे डॉक्टर जो है मुझे उससे कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस हॉस्पिटल में चल रहा है, कौन सी कंपनी करवा रही है, दे हैव गॉट नो आइडिया. So this is an ongoing challenge that we should be including all sections of society in making these clinical trials more successful and more inclusive. So eligibility criteria इसमें restrictive बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें comorbidities ना हो, ये ना हो, वो ना हो. So we should be working on these aspects as well for making oncology trials even better. Regulatory barriers, access to clinical trial sites, which means you are living in far off places, and that's why you can't even reach a hospital, let alone a site for clinical trial. Language, cultural barriers. I've seen that. People not knowing the language, they will not sign your form. And low health literacy, mistrust, fear of exploitation. We want them to get help to the clinical trial. They said, "Aapka kya fayda hai isme?" So they think that probably if somebody is enrolling you in the clinical trials, inka kuch fayda hoga. So these all things also need to be taken into consideration while dealing with the cancer patients. So some of the drugs that are already being used in the cancer patients, these are classes of anti-cancer drugs. Most of them are systemic drugs. Systemic means, I mean, you would know that as you defined initially, कि cancer cells होते हैं जो rapidly proliferating होते हैं, right? तो ये drugs उन सारे cells को hit करेंगी जो कि rapidly proliferating है. कहाँ पे होते हैं rapidly proliferating cells? Blood. इसीलिए सबसे पहला effect blood पे आता है. Gut lining वहाँ पे आता है. Hair growth. तो इसलिए balding शुरू हो जाती है. Skin के ऊपर आता है. So wherever जहाँ भी cells grow हो रहे हैं सब effect होते हैं. So these are systemic therapies. जो सबको cluster bombing. And then there are targeted therapies also, जिसमें जैसे antibody drug conjugates आप लोगों ने देखा, इसमें small molecules भी हैं और antibodies भी हैं, जैसे cetuximab है, panitumumab है. These are the antibodies that are specifically administered for colorectal cancer patients. And then you have got different mechanisms which are being targeted here. So RNA, DNA, both of them are here, and there are different drugs, pentostatin, 6-mercaptopurine. These are again, but most of them are systemic. DNA जहाँ DNA को वो replication से block कर दिया. 5-fluorouracil is a pyrimidine analog. तो pyrimidine analog का मतलब वो जाकर के decoy की तरह DNA में लग गए, and then they stop the DNA from replicating, and the cell goes to die. So again, they are all systemic, means they are not targeted. They are going to kill all the cells that are rapidly proliferating. And then you have the biologics or monoclonal antibodies. They are more targeted, more specific, and that's why अभी जो checkpoint inhibitors जो immunotherapy के नाम से कैंसर में hope नज़र आई है, जो successful stories आ रही हैं, वो इन antibodies की वजह से आ रही हैं कि कैंसर में कुछ खास receptors होते हैं, पहले उसको identify किया गया, वो receptors पता लग गए, तो अब उनको target किया जा रहा है antibodies के through. Right, Sharjeel? Okay, good. You already took the nap, huh? All right. So I wish we can. So these are different T cell receptors as well as APCs, antigen presenting cells or tumor cell. So these are the different receptors, CD19 and PD-L1, PD-1. These are all different types of receptors that are found. And if you block these receptors, that means you're blocking the functioning of the cancer cells and you're specifically killing the cancer cells. And that is the basis of immunotherapy and CAR T cells. Anybody familiar with CAR T? अभी recently India में भी approve हो गई है. Again, very expensive therapy. Chimeric antigen receptor, T cells. Chimera, anybody knows chimera? Yes, combination of two. Chimera is combination of two different things. So now here also there are different generations. तो chimeric antigen receptors में जो receptors होते हैं cells के ऊपर, उसको दो अलग-अलग format में बनाया जाता है. And this is engineered within the T cells. So इसलिए CAR T cell
थेरेपी कहलाती है, और ये फिर टी सेल्स वापस डाले जाते हैं पेशेंट्स में ताकि वो फिर अपने ही कैंसर सेल्स को मार सकें. This is how a simple one looks like. So this is a CAR, chimeric antigen receptor, and these are the transmembrane domain, and then you have got the co-stimulatory domain and CD3 domain. So these are different domains which are going to function, and this is for the recognition for the tumor cells. Once they bind to the tumor cells, these domains help in releasing the cytokines and killing of the tumor cells. Then in case of, this was all about the drug discovery. Now we also have the drug delivery innovations. You have a drug 5-fluorouracil, and I know a guy, Patrick Chong, he has got his company Nantomics, and he's also doing multiomics. And he was the one who developed a drug called Abraxane. Abraxane was Taxol in liposome, and he's the wealthiest surgeon in US. So Abraxane was just a liposome surrounding the Taxol. Taxol is very toxic chemical that was used to treat cancer patients. But then he made it better. He reduced the dosages through this drug delivery innovations. So there are different types of formulations. So this comes during the formulation stage. अब drug discovery हो चुकी है, सारे studies हो चुकी हैं, अब उसको बेहतर से बेहतर बनाना है. तो ये सुबह जो lecture हो रहा था ना, फर्स्ट इन क्लास, बेस्ट इन क्लास और मी टू, ये किस में आएगा? बेस्ट इन क्लास. कि आपको फर्स्ट इन क्लास तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये ड्रग ऑलरेडी हो चुकी है. अब बेस्ट इन क्लास कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आपको उनकी पैकेजिंग करनी है. पैकेजिंग के लिए डिफरेंट तरीके हैं, उसमें ड्रग डिलीवरी और नैनो टेक्नोलॉजी कम्स इनटू प्ले हियर. एंड इट कुड बी पैसिव टारगेटिंग or active targeting, or it could be triggered release. Triggered release is like release due to pH change, release due to change in the particular enzyme. जैसे हमारे गट के अंदर जगह जगह पे अलग अलग एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, राइट? हमारे गट में जगह जगह पे pH अलग अलग हैं, लंग्स का मामला अलग है. So based on these physiological changes, we can have targeted release. Release means पहुंच गया वहाँ पे, but it is getting released due to certain stimuli. Controlled release. So one of the examples is hydrogel. Hydrogel is a substance that has capacity to absorb a lot of water. So we can pack a lot of drugs in this, and then this is also protected from the immune system, and it reaches to the desired organ for the release of the drugs. And this also helps in the to overcome the drug resistant. In this case, it is about, I think this is a redundant slide. We have already talked about this. So these are different types of mechanisms which are helping in the drug resistance, and this needs to be taken care of by the help of the drug delivery vehicles. These are the different strategies to overcome the drug resistance by targeting the cell death or combination approaches, using more than one drug. You can use, like somebody asked today, can we load 2 molecules in the same antibody in antibody drug conjugates? Yes. Even 3 can be loaded to have maximal efficacy. Now there's a debate कि 2 load करना ज़्यादा बेहतर है या 1 load करना ज़्यादा बेहतर है, because it can also increase the toxicity, right? It could, because one molecule is going to be working on one aspect of the target. You see, in this case, there are different aspects, right? It could be tumor heterogeneity, suppose there is a genetic alteration as well as epigenetic alteration. So the gene is the same, but it is handling both the mutation as well as the epigenetical changes. So now you have 2 different drugs to take care of 2 different aspects. This is supposedly more effective, but it could be more toxic as well. Yes, Shada. Yes, absolutely, because underdose also can cause resistance. So basically we can say that if we use nano formulations, that could also reduce the chances of resistance. Yes, absolutely. That's a perspective that we need to keep in mind, that underdosing is also a big problem. That's why in case of antibiotics,
it said पूरा कोर्स खाइए. आपने 2 गोली खाई and you saw the effect, you just left it. No, you are making bacteria more resistant, right? So kill it completely. No, but Dr. Imad will be able to answer that, and I think he told you that it's 2 or 3 max that is possible so far. Yes. Yes, जो चीज़ ज़्यादा potency means it can, a small amount can have a big effect. So it can also have more toxicity, right? Like a rubber bullet versus an actual bullet, which is, it's more effective, but it is more toxic as well. So there are several personalized and precision medicine approaches. I think I would skip that. We have already talked about it. And then this is important, where companion diagnostics. This is same as biomarker stuff that we were talking about. So companion diagnostics means एक तो है कि आपने diagnose कर लिया कि cancer है, right? Companion diagnostic, now you are going further in telling this patient needs which treatment. This is mostly from liquid biopsy is a big field that is in this. कि आप, क्योंकि अगर regular monitoring भी करनी होती है, कैंसर प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा है, मिनिमम रेजिडुअल डिजीज तो नहीं है उसके अंदर, उसके लिए कंपेनियन डायग्नोस्टिक, एंड दिस इज ऑल्सो $1 billion मार्केट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली थेरेपी, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द डायग्नोस्टिक एजेंट्स एज वेल. So in case of when we talk about future directions, there's a lot of, I'm a fan of data technology, you take it or not, but this is going to be, because I had a friend who was a computer scientist in Finland, and he was, when I invited him to give a lecture, he was talking cancer better than a cancer biologist. Because the data scientists and the people who are able to accumulate all this, they have already written success stories, and I think the next major breakthrough can come from here. So the use of AI and using all the data points and creating a personalized approach towards cancer, that will be the real breakthrough. So that's where the AI helps us in the drug development, even drug efficacy, and it helps in every stage now, antibody design, formulation, new antibiotics. I don't know if you remember the story from Thomas Baker. He recently made an antibody on the computer screen. No need for animal testing. He did all the studies on his computer. Thomas Baker, the Nobel Prize winner. Google's AlphaMind, that's the company that is now telling you the protein structure without even doing any wet lab studies. So this is going to be the future. So I always emphasize on including data science into your research in whatever way you can. I think I'll skip this because you heard a lot about PROTACs today. So this is also one of the upcoming field, PROTACs, and bispecific antibodies, which means having different targeting capabilities, and integration of multi-omics and big data analytics. That's what I'm guiding again back to, that we need to take into considerations DNA, RNA, protein, metabolites, and other factors all together, and then apply the big data analytics to come up with a solution that will be relevant for the patient. And for that, we are already having a lot of treasure in terms of these databases, the Cancer Genome Atlas. And if you go to Cancer Genome Atlas, there are thousands of patients. There was a group in Harvard, Todd Golub, he sequenced about 25,000 cell lines. I think name a cell line on Earth, and he has done all the sequencing. Different combinations, different treatments, different passage number. He has done all things. So there's a lot of data that is available. So you don't have to generate data now. You can start from there itself. Because I know we are in India, we are very much in the crunch for reagents and instruments and all that. So this is a good jump start here. Right. So this is machine learning omics. They have done different cancer types here.
and machine learning based simulations, predictions. So the Cancer Nanomedicine Consortium that I have made here, we have got a surgeon who collects the sample from the OR, operation theater. One of my students, she's already collecting samples. That sample goes to pathology, where the pathologist tells you this sample is cancer, this sample is normal. He gives us a green signal, okay. It comes to my lab, I do the DNA extraction, RNA extraction, and protein extraction. Then it goes to the sequencing facilities, where we will be generating all the sequence data. And all this data will go to the AI guys. AI guys build a prediction model, and they say, okay, this patient has got this much life, this patient can be treated with these drugs, and then it goes to the oncologists in the oncology department, and it's up to them to decide whether this drug should be given to the patients or not. So this is my dream team. Alhamdulillah, I've made the team in AMU, and we are hoping that we'll have a spin-off company by providing these reports to the clinicians if everything goes well. So in conclusion, I would love to hear the conclusion from you guys rather than telling myself. If one of you, few of you can help me with the conclusion. Yes, please. What do you get from the slides? That will be the conclusion. My conclusion is more important than your comprehension. Anybody? As soon as we conclude, we are ready to go. Come on, quick. Yes. From slide 1 to slide 55. Any one thing that you remember? This will also help you for your exams. Cancer's continuous evolving syndrome, if you would like to call it that. And it's the one thing that I know that a series of compiled omics that you mentioned would eventually lead to finding a specific treatment for cancer itself. Good, that's very satisfactory conclusion for me. That he understood that multi-omics is defining a cancer cell. Yes, anybody else? Okay, good. Anybody else? Come on, quick, 2, 3 more, and then we wind up. Hmm. Hmm. Yes. Okay. Cancer is not due to the change in the DNA only, it is because of change in protein and some other markers which are present in the cell and outside the cell. So it is not only because of the mutation in the DNA. Good. Wonderful. Thank you. Different types of Yeah. profiles. So it's a combination. It's the elephant. It's not just the tail, it's not just the ear, it's not just the trunk, it's a combination. Right? And with that, I would like to acknowledge and sincerely acknowledge my 2 PhD students. Swati, she is not here, she's on vacation, enjoying a wedding. And the other one, she is tirelessly working at the back, Saida Shabi Zafar. They even helped me in preparing this presentation. So this presentation is not entirely my creation. They have helped me in preparing this presentation. Any questions or we wind up? Yes, Bashir. Okay, the sequencing is of several types. One is whole genome sequencing, and people rarely do it. It's expensive. And first of all, we don't do sequencing. We don't have any sequencer, even an entire ELIGA. Next is exome sequencing. Exome sequencing is that portion of the genome which is expressed in the form of genes. So this is known as exome sequencing. So mostly we go for exome sequencing. And the third type is targeted sequencing, where we know that we have to sequence these 50 genes, 100 genes, 200 genes, 500 genes. This is known as targeted sequencing. But we go mostly for exome sequencing. Exome sequencing, not specifically which has the mutations only. No. There is no such sequencing where you can do only mutation. That is called
Targeted sequencing, where you have got the panel of genes that are carrying mutations. So you can sequence those, say 50 genes, 25 genes. That is targeted sequencing. About the life expectancy of the patient, that on the basis of the pathological finding also we can tell now which stage of cancer is that, stage 1, stage 2, stage 3. Yes. Then what's the role of the AI team here? This question is about the use of AI in predicting the lifespan. I think nobody can define the lifespan. Okay. To be very honest, there is no such model which can tell you, because so far we have not been capable of capturing all the factors of lifespan, and that's a. But yes, it can tell us if suppose CEA levels in case of colorectal cancer very fast. Now, patients who are having colorectal cancer, they have got a prognosis of fast disease and very worst prognosis. So them die. Okay. Fine, yes. Right. Genomics and gut like as a predictor for colorectal cancer and other cancers. So I think your question directly, but I usually I'll do that as well. Is there a potential microbiome? Every as I said, capture more closer we are going. In fact, Patrick San Francisco, and I asked him why you are not doing metabolomics. He said we are. Will see it soon. Check his company NAND, and they have got a tool which is giving into the for doing all this analysis. They are already treating the patient. So, see, as you said, if you vasculature of a cancer, it would spread. It would go into a shock. It would become aggressive and spread. This has been observed. Okay. That in some patients, if you disrupt they became more aggressive. So, if a cell is tumor cell is cancer, we do biopsy to test whether it's cancerous or not. That won't disrupt its path. It could. In fact, in prostate, that don't do anything. Wait and watch. Prostate cancer don't go for any surgery. Tumor. It might hang over for several without any symptoms, without any lives. So, yes, please. They are advised to go for surgery. Surgery still remains the best option. See and remove. You will go there and do the job that you can do by your. But there, if you leave 1 or 2 cells coming back. Metagenomics, I haven't got the money. Not by you, by anyone else. How do we evaluate drug mechanism in cancer cells? Mechanisms, and we can assess whether this drug is. So one of them is like drug. So drug is going inside the cell, but it's. So if we find out ion channels which are doing pumps that are effluxing it, that we discovered ATP at B1 base molecule, and maybe helping in drug resistance. But it is also an ion channel flipase protein. All right, so I think
we're done for the day. Let's see, and we'll see you tomorrow. And I apologize for today's delay in lunch. It was a huge delay, and it should not have happened. But let's hope we do it better tomorrow, inshallah. Okay. So there's some tea outside if you want to have some more caffeine. Otherwise, we'll see you tomorrow.